अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन द लर्निंग विद समीना। सो आज के एपिसोड में हम आइल्स लिसनिंग टेस्ट एक अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले पेपर पे ही फोकस करेंगे पूरी वीडियो में, फिर मैं आपको हिंट्स दूंगी, टिप्स दूंगी, हम वन बाय वन हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक साथ, और फिर एट द एंड आपने मुझे बताना है कि हाउ मेनी यू हैव गॉटन करेक्टली, एंड आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगी। बट आपको मैं ये बताती चलूं कि पेपर और पेंसिल साथ लेकर बैठे हैं, बिकॉज आज हम अपना टास्क कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, सो नाउ वी आर ऑन पेपर, और ये मैं आपको बताती चलूँ, ये पहला सेक्शन है हमारे 4 सेक्शन से जो कि आइल्स लिसनिंग टेस्ट में होते हैं। जिन लोगों को अभी तक फॉर्मेट का नहीं पता, मॉडल का नहीं पता, वो इससे पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें, दैट विल हेल्प देम। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं। ये कुछ सवाल हैं, इनसे पहले हमें वक्त दिया जाता है। यू आर गिवन टाइम कि ये आपके पास टाइम है, सवाल पढ़ लें, अपने आंसर्स देख लें, क्योंकि आपके पास तब सोचने का, देखने का टाइम नहीं होगा, आपने इंस्टेंटली आंसर लिखना है। तो चलें, अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वन बाय वन आवाज़ सुनाऊंगी, तो आपने वो गौर से सुननी है। साथ साथ मैं आपको हिंट भी देती रहूँगी कि आपने इन वर्ड्स पे ध्यान रखना है, और ये उन्होंने आंसर बोला है, तो ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। The test is in 4 part. Part 1, Part 2, Part 3, and Part 4. Now look at Part 1. Part 1. Good evening, everyone. As you know, this is our last meeting before we set off on our annual week-long hiking trip. So tonight I'll be telling you everything you'll need to know. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Did you hear the question? अगर आपने गौर से नहीं भी सुना, it's written there, so you know it. What they are going to talk about, वो बात करने वाले हैं कि हाइकिंग के ट्रिप पे आपको कौन सी 5 चीज़ें लेकर जानी चाहिए, एंड दे आर गोना नेम देम वन बाय वन। तो आपने गौर से सुनी है, तो हम आगे सुनते हैं कि हाउ इट्स डन, ओके। Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good evening, everyone. As you know, this is our last meeting before we set off on our annual week-long hiking trip. So tonight I'll be telling you everything you'll need to know to be ready for the trip. Let's talk about equipment first. Having the right equipment is essential for your comfort and safety. First, you'll need a warm and comfortable sleeping bag. However, you won't need to worry about carrying a tent, since we'll be sleeping in shelters along the way. Also, part of the fee you've paid for the trip goes toward food, so you won't need to put that on your packing list either. We found, though, that it's more efficient for each person to bring his or her own dishes, so be sure to pack a plastic bowl, a cup, and a fork, knife, and spoon. That's all you'll need in the way of dishes. Perhaps the most important item to put on your list is a comfortable pair of hiking boots. Nothing ruins a hike more than getting blisters and sores from ill-fitting boots. So make sure your boots fit you right. Shoes and sneakers aren't adequate for the type of hiking we'll be doing. Of course, a backpack is necessary for carrying your equipment. Make sure you have one that's lightweight and comfortable to carry. Walking poles have become popular among hikers recently, but we don't recommend them. They can get in the way when too many hikers are using them at once, and some serious injuries have been caused. So it's best to leave those at home. Let's see, what else? Oh yes, some people have asked me about trail maps. They're available, but you really don't need them, as your hike leaders have scouted out the trail and will be guiding you along the way. And don't forget to bring a warm jacket. You may think you won't need one in this warm summer weather, but remember that evenings in the mountains can get quite cold. Is there anything else I need to tell you? Oh, yes, your guides will each be carrying a first aid kit, so that's one less thing for you to pack yourself. Remember, you'll be carrying your backpack all day, so keep your load light and don't overpack. ओके, तो आप लोगों ने सुना कि हमारे सेक्शन 1 में उन्होंने पहले सवाल में 5 आंसर्स हमें दिए हैं।
तो उन्होंने हमें कंफ्यूज करना भी चाहा है, उन्होंने 5 आंसर्स भी दिए हैं, हमें बताया है कि हमने क्या क्या ब्रिंग करना है, लेकिन उन्होंने सारे यहाँ पे ऑप्शंस को जिक्र किया है, लेकिन इन अ ट्रिकी वे। कि उन्होंने बोला कि वो लाने थे लेकिन अब नहीं लाने, और कुछ हैं हमारे पास उनकी ज़रूरत है, और जो लाने हैं उनमें 5 हैं, जो कि हैं स्लीपिंग बैग। उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया कि स्लीपिंग बैग लाना है। फिर उन्होंने कहा कि डिशेस भी लानी है, जिनमें उन्होंने बताया कि फोर्क, प्लेट एक्सेट्रा। फिर उन्होंने थर्ड पे बोला हमारा ऑप्शन ई, हाइकिंग बूट्स लाने हैं लाजमन। फिर उन्होंने बोला कि वॉकिंग पोल्स लाने होते हैं, कुछ लाते हैं लेकिन हम प्रेफर नहीं करते। फिर फोर्थ हमारा आंसर है बैकपैक, जो कि उन्होंने कहा लाना है लाइटर वेट में ताकि हमारे लिए क्लाइंबिंग आसान हो। फिर उन्होंने कहा कि आई भी लाना है विच इज़ जैकेट, बिकॉज आपको सर्दी लग सकती है। तो इस तरह उन्होंने बड़े ट्रिकी वे में हमें 5 आंसर्स दिए, लेकिन उन्होंने फिर एंड में छठा भी उन्होंने मेंशन कर दिया कि किट होती है, तो वो ये लाना नहीं है, होती है। तो हमारे टेक्निकली उन्होंने 5 आंसर्स दिए हैं। तो आपने गौर से सुना होगा तो आपको 1 बाय 1 सबका पता चला होगा। इस तरह हम अपने पहले 5 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, ठीक है, और हम नोट डाउन कर लेते हैं इस तरह जिस तरह मैंने किया है। चलें अब हम मूव ऑन करते हैं 6 to 10 क्वेश्चन पे। इनको पहले पढ़ लेना है क्वेश्चंस को, जो अब हमें वो टाइम देंगे, बजाय इसके कि हम वेस्ट करें पुराने आंसर्स पे। पुरानों को देखते रहें, पुराने क्वेश्चन को देखते रहें, हम नेक्स्ट को देखेंगे, उसके क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे, और वो भी ध्यान से कि हमारे सवाल क्या हैं, उनके कुछ डिफरेंट मीनिंग भी वो बोल सकते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम वर्डिंग नहीं यूज़ करते हैं जो आपके सामने नज़र आ रही है। जैसे सामने लिखा हुआ है स्टॉप एंड वेट एट एनी डैश, ठीक है, कुछ और भी वर्ड वो यूज़ कर सकते हैं, वो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, वो डोंट ट्राई टू क्लाइम नहीं यूज़ कर सकते, वो कुछ इसके एडवांस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको बात का पता होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने बोला क्या है। इससे पहले कि हम अपने सवाल सुने, मैं आपको ये बताती चलूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि वो सेफ्टी रूल्स फॉर हाइकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल 6 to 10 सवाल होंगे, 4। पहले सवाल में वो जिक्र करने वाले हैं कि यू हैव टू ऑलवेज स्टे अहेड, आपने आगे रहना है, ऑफ द स्वीप, आगे वो क्या बोलेंगे तो वो हमने नोट डाउन करना है। फिर उन्होंने पूछा है स्टॉप एंड वेट एट एनी, वो साइन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एट एनी पाथ या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पहले इमेजिन कर लें कि वो व्हाट इट कैन बी इन द हाइकिंग। डोंट ट्राई टू क्लाइम डैश, अब यहाँ पे भी आपको अटेंटिव रहना है कि वो किस चीज़ से आपको रोकेंगे, कि क्या चीज़ आपने क्लाइम नहीं करनी है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट डैश वाइल्ड एनिमल्स, मतलब उनको क्या करना है, टीज नहीं करना, क्या नहीं करना, ताकि आपको पहले ही आपको मेड श्योर हो कि वो इसके बारे में जिक्र करेंगे। लास्ट है ऑलवेज कैरी डैश विद यू, कि वो किस चीज़ का जिक्र करेंगे, कि क्या हमेशा अपने साथ कैरी करना है, वो डिफरेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, और साथ साथ हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है और हम कितने करेक्ट लेते हैं, और मैं साथ साथ आपको हिंट भी दूंगी। Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. I know you're all experienced hikers, but it's always worth repeating the rules of the trail since they're so important. These rules are in place for the safety of everyone on the trip. As you know, there'll be a hike leader walking at the head of the line who will show the group the way. At the end of the line will be the rear leader, or sweep. It's important to always stay ahead of this person while we're on the trail. There are several different trails on the mountain where we'll be hiking, and they cross each other at some points. When you come to any intersection of trails, stop and wait for the rest of the group to catch up. This way we can be sure that no one goes off on the wrong trail. Let me emphasize here how important it is to stay on the trail. We'll be climbing through some steep and rocky areas. Don't be tempted to go off on your own and try to climb some rocks. That can be quite dangerous. Also, it's not likely, but it is possible that we'll encounter some large wild animals along the way. The last thing you want to do is try to feed any of them. That will just encourage them to follow us, which could lead to some dangerous situations. One last thing, before we set off hiking each morning, be sure to fill up your water bottle. This is perhaps the most important safety rule. Dehydration can be a serious problem when you're out in the wilderness, so you must always be sure to carry an adequate supply of water with you.
There you go. मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं सामने, ताकि आप लोगों को पता चले कि जब उन्होंने वो बोले थे, जब वो उन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे, तो वो फ़ौरन आपने नोट डाउन कर लेने हैं। आपके पास और टाइम नहीं होगा, ये दोबारा चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने 6th 7th 8th 9th 10th का आंसर जब जब वो बोल रहे थे, आई इंस्टेंटली राइट देम डाउन। और आप भी इस तरह ही प्रैक्टिस करेंगे। आपने एक रजिस्टर रखा होगा अपने पास और उसमें आप फ़ौरन आंसर लिखेंगे। एट द एंड आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपने 40 में से कितने नंबर लिए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 2, जो कि कुछ इस तरह का दिख सकता है। उसमें हमारा सबसे पहले 11 to 16 क्वेश्चन का आंसर हमें बताया जाएगा इन कन्वर्सेशन, और वो प्ले की जाएगी। तो हमने ध्यान से सुनना है और इनके आंसर देने हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं टॉप पे है, जहाँ पे डेट मेंशन करनी है -December, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि 1 वर्ड होना चाहिए, 1 वर्ड या नंबर होना चाहिए, ओनली 1 वर्ड, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जैसे कि इंसर्ट योर नेम्स एंड कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो भी हैं, हमने 1 वर्ड की सूरत में अपने आंसर्स लिखने हैं, जो भी उन्होंने आंसर के लिए हमें स्पेस दी गई है। जैसे कि तो आपने देखा यहाँ पे उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बात की जा रही है, एना के या मार्क के, और उसी को उन्होंने डिफरेंट बॉक्सेस में दिया गया है और इस तरह करके वो मेंशन करेंगे। दोनों को 1 by 1, कंफ्यूज नहीं होना और गौर से सुनना है। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रेजेंटेशन के 3 पहलुओं को मेंशन किया है। जैसे सबसे पहले वो जनरल इंप्रेशन के बारे में बात करेंगे, बाद में हैंड आउट्स के बारे में, फिर मिडल ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में मेंशन करेंगे और सवाल उन्होंने दिए हुए हैं और स्पेस में हमने आंसर लिखने हैं। तो चले कन्वर्सेशन प्ले करते हैं और अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। Now it turns to part 2. Part 2. You will hear a female and a male student talking to a female tutor about a self-evaluation form. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now, listen carefully and answer questions 11 to 16. Now, Mark and Anna, I have to say that I thoroughly enjoyed your joint presentation on the application of robotics in a non-industrial setting to the group on the 2nd of December, and it is clear that you have both devoted quite a lot of time and effort to it. Have you had a chance to fill in the self-evaluation form for the session? Yeah, we have. So, Mark, what do you think overall? Well, generally I felt the presentation worked very well. In fact, we seemed to hold the attention of the others throughout. And the pace of delivery was fairly even, as were the range of activities we organised. I agree with Mark, but I'm not sure we were comprehensive or academic enough. No comment, really, except that I don't think there was any question of it not being thorough. ओके, तो आप लोगों ने सुना, उन्होंने डेट मेंशन की ऑन टॉप, बट वो इतना स्मूथली किया कि आप नोटिस अगर नहीं करेंगे तो आप मिस कर देंगे। बाद में मार्क और एना जब सेपरेटली रिमार्क्स दे रहे हैं, तो मार्क के उसने एग्जैक्ट सेम वर्ड बोले हैं, बट एना ने एग्जैक्ट सेम नहीं बोले कि ये नॉट थॉरो, नॉट इनफ नहीं था। इनफैक्ट उसने डिफरेंट वर्ड यूज़ किए हैं, विच वॉज कम्प्रीहेंसिव एंड एकेडमिक, ठीक है। तो उसने कम्प्रीहेंसिव यूज़ किया है और ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। ऑब्वियसली सेम एग्जैक्ट वर्ड मेंशन नहीं है, बट उसका मीनिंग मेंशन्ड है, जो कि है नॉट थॉरो। तो उसने कहा है नॉट कम्प्रीहेंसिव, कि वसी नहीं था, थॉरो नहीं था, इनफ नहीं था। तो उसके साथ साथ उन्होंने एकेडमिक भी बोला है, जो कि आंसर भी दे दिया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने पढ़ लेना ना, जैसा मैंने आपको पहले भी किया, आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, तो आपको पता होगा कि वो किस बारे में बात करने वाले हैं। चाहे वो कैसी भी वर्डिंग यूज़ करें, चाहे वो कैसा भी सिनोनिम या कुछ भी यूज़ करें, तो आपको ऑलरेडी जब पता होगा तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नाउ लेट्स प्ले द नेक्स्ट कन्वर्सेशन। I think we were a bit too chatty and too jokey at times, rather than formal. Okay, what do you think were the best areas? And which do you think can be improved on? Well, everything could have been improved on. I felt very good about the handouts. We'd spent a lot of time putting them together. ओके, सो नाउ लिसन अटेंटिवली। वो बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हैंडआउट्स के बारे में। सो लेट्स प्ले द कन्वर्सेशन। They had a very professional appearance as we bound them into a booklet. डिड यू कैच इट? उन्होंने कहा प्रोफेशनल अपीयरेंस, दे वर लुकिंग प्रोफेशनल। हमारा जो 13 क्वेश्चन है, आई विल प्ले इट अगेन।
They had a very professional appearance as we bound them into a booklet. सो नाउ मूविंग ऑन वी विल हेयर एना का पॉइंट ऑफ व्यू. हम एना का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे और थर्ड होगा सजेशन ऑफ ट्यूटर. टीचर क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं. तो वही हमारा 14th क्वेश्चन है जो कि वो कहेंगे अबाउट रिड्यूसिंग द हैंड आउट्स. ठीक है, अबाउट रिड्यूसिंग द हैंड आउट्स. और वो जो बोलेंगे वो हमने इंस्टेंटली लिखना है. और रिमेंबर ये वन वर्ड पे मुश्तमिल होना चाहिए, वन वर्ड और वन नंबर. To me, the handouts were the best part, as we had a very extensive bibliography and the booklet seemed to go down well. The booklet you did for the handouts certainly showed you had done a lot of work. But I think that you put too much material into it, and people got distracted by it. Perhaps you could have cut the handouts by about a third. I see. Well, when I come to think about it, maybe you're right. सो नाउ यू गॉट द आंसर. उन्होंने मेंशन किया है कि रिड्यूस बाय अबाउट अ थर्ड. तो हमने यहाँ पे अपना आंसर या तो इंग्लिश में लिखना है, वर्ड में लिखना है, या फिर हम उसका नंबर में 3 में लिख सकते हैं. अब जंप करते हैं हमारे 15th और 16th क्वेश्चन पे जो कि होने वाले हैं अबाउट मिडल ऑफ प्रेजेंटेशन. और यहाँ पे प्रोफेसर का जो क्वेश्चन है जो वो बोलेंगे वो ऑलरेडी पुट डाउन है. मार्क और एना के जो रीमार्क्स होंगे वो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे विच इज़ अबाउट पावर पॉइंट स्लाइड्स नॉट इन. ठीक है, और उसके बाद एना विल से ओवर एस्टिमेटेड डैश एबिलिटी. तो अब अपने क्वेश्चन तो पहले पढ़े हुए हैं, अब वो आंसर्स जब बोलेंगे तो आपने जल्दी से नोट डाउन करने हैं. आप कन्वर्सेशन प्ले करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट. Okay. But there were times in the middle of the presentation where things did go a bit astray. I think that was my fault when I got the PowerPoint slides out of sequence and I had difficulty getting back on track. I also think we rated our technical ability too highly, especially when operating under pressure. I had never done a presentation with technical equipment before, so it was a steep learning curve for me in particular. Yes, I think you could have done with a bit more practice with the equipment beforehand. ओके, तो यहाँ हमें आंसर्स मिल चुके हैं. उन्होंने मेंशन किया कि पावर पॉइंट स्लाइड्स आउट ऑफ सीक्वेंस हो गए थे, आउट ऑफ सीक्वेंस हो गए थे. बट यहाँ पे हमारा वर्ड है नॉट इन सीक्वेंस. बट आपको समझ तो आ गई है, आपने गौर से सुना है कि वो पावर पॉइंट स्लाइड्स की बात करेंगे. इसका आंसर हमने सीक्वेंस लिखा है. एंड एना ने बहुत क्लियरली बात की अबाउट द टेक्निकल एबिलिटीज़. उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट मेंशन किया है, सो यू हैव टू नोट डाउन इंस्टेंटली. जैसे ही आंसर को बोलते हैं मैं फ़ौरन आंसर नोट डाउन कर रही हूँ ऑन टॉप ऑफ दिस आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि हमने इंस्टेंटली आंसर लिखना है. और साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ कि उन्होंने कैसे बोला, क्या बोला, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए. आप फिर इसको सेकंड टाइम भी प्ले कर सकते हैं इफ़ यू वांट प्रैक्टिसिंग के दौरान. बट याद रखिएगा, पेपर के दौरान, टेस्ट के दौरान आप दोबारा प्ले नहीं कर सकते. फॉर वंस यू विल गेट टू हियर दिस एंड आपने इंस्टेंटली आंसर करना है. सो हियर with the focus and with determination. Now let's move on to part 2 of section 2 which has 17 to 20 questions. ठीक है, टोटल हमारे 4 सवाल हैं यहाँ पे. और आप देख रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन पे प्रोमिनेंटली अपना लिखा हुआ है रूल कि इसमें आप नो मोर देन 2 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. 2 वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो मार्क्स डिटेक्ट होंगे. तो अब देखते हैं पहले हमारे सवाल क्या हैं और बाद में उनको करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा टू रीड देम आउट. और मैं आपको बताती चलूँ कि 30 सेकेंड 20 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता. तो ये जो हमारा सवाल है ये कंटिन्यूटी है लास्ट सवाल की. तो यहाँ पे भी एना, मार्क और प्रोफेसर बात करेंगे अबाउट द प्रेजेंटेशन, लेकिन वो 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे विच आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिलीवरी एंड स्कोर. वो जैसे जैसे बोलते जाएंगे आपने उसको नोट डाउन करना है. पहले आपको पता है कि पहले मार्क के रिमार्क्स हैं, फिर एना के हैं, फिर प्रोफेसर के. तो उस तरह ही आपने नोट डाउन करना है, सुनना है कि वो क्या बात कर रहे हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि वेरी फोकस थे बट क्लियरली डैश व्हाट, देन नो कमेंट्स. देन डिलीवरी के बारे में परफॉर्मेंस वाज व्हाट, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, इट कैन बी एनीथिंग. तो आपने नोट डाउन करना है कि अच्छा वो परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू देने वाले हैं. देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वो मेंशन करने वाले हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड्स द. ठीक है, वो ऐसे कुछ वर्ड्स बोलेंगे, बट देयर इज़ समथिंग नीड और देयर इज़ समथिंग वी ऑल्सो नीड टू ऐड, देयर इज़ एन एडिशनल समथिंग वी नीड, ऐसे करके वो बोल सकते हैं. और फिर बाद में आपने वो नोट डाउन करना है. लास्टली वी हैव स्कोर्स. एक स्कोर वो ऑलरेडी पुट डाउन कर चुके हैं विच आर 6. 20th में कौन से स्कोर हैं वो आपने देखने हैं. और रिमेंबर रूल्स कि नो मोर देन 2 वर्ड्स, आप 2 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इसमें. तो अब सुनते हैं हमारी कन्वर्सेशन एंड आंसर करते हैं क्वेश्चंस को. Now listen and answer questions 17 to 20. What about the next item on the feedback form?
the aims and objectives? No, I think they were very focused, and we followed them through well, I think. We wanted to show how Europe was lagging behind other areas of the world. Yeah, I think they were clearly set out. Yes, agreed. No comment there. ओके सो आपने सुना एना ने बोला है सेट आउट। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एना के रिमार्क्स हैं। 17th क्वेश्चन एना का रिमार्क है, देन 18 मार्क का है। तो आपने सबकी कन्वर्सेशन पे ध्यान देना है, और जब आपने देखना है कि अच्छा कौन सा सवाल है, किस रो में है, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस बंदे ने जो बोलना है दैट इज़ गोना बी द आंसर। तो आपने बहुत अटेंशन पे करनी है। तो आंसर वॉज सेट ऑफ, क्लियरली सेट ऑफ। तो हमने ये नोट डाउन करना है, और फिर हम फ़ौरन मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे। कब वो डिलीवरी के बारे में बात करेंगे और कब वो परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, विच वॉज। मूविंग ऑन, हम बात करेंगे कि किसकी ज़रूरत है, नीड्स द डैश। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये नहीं बताएंगे कि आपको किन 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 चीज़ों की इम्प्रूवमेंट है, वो आपको नीड्स द, नीड्स व्हाट, ठीक है। वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, नीड्स द इम्प्रूवमेंट टू डू बेटर एट दिस ब्ला ब्ला ब्ला, इट कैन बी दैट। बट रिमेंबर यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, तो वो जो भी बोलेंगे कि व्हाट यू नीड, वो बोलेंगे व्हाट यू नीड, तो वो आपको पता चल जाएगा कि नीड्स था, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपने बहुत अटेंटिवली सुना है। अब हम दोनों ये सवाल एक साथ ही प्ले करेंगे विदाउट अ पॉज, और एट द एंड मैं आपसे पूछूंगी कि आपने करेक्ट गेस किया या नहीं। The diagrams and charts were appropriate. Yes, I have put that too. They did work well in helping to illustrate and break up the presentation by cutting down on the number of words and text on the screen. What about delivery? Well, I think our performance was average. It was difficult to coordinate speaking and presenting the material at the same time. I was quite self-conscious of what I was doing. It was down to a lack of experience. Unfortunately, both of you had the habit of standing in front of the projector, so you kept blocking the image on the screen. To me, this is the area that requires the most improvement. The section on the predictions of the commercial application in the future, I think, appeared a bit haphazard. To me, it was a weak point of the presentation. And I think that some of the slides could have had fewer words. And we could have done some fancy graphics with the words. If you had to give yourselves a mark overall, how much would you give out of 10? 6, maybe? I'd be happy with that. Though bits were probably nearer a 7. So I'd say a 6. Anna, what do you think? I think for me it's perhaps a 7. Okay, did you find the task and the evaluation useful? ओके सो हम यहाँ पे अपने सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं। तो 18th का हमारा था जब मार्क ने बोला और परफॉर्मेंस वाज एवरेज। ओके, मैंने साथ साथ लिखा है, आपको पता चल गया होगा। जैसे वो बोलते हैं साथ ही आपने लिख देना है, ताकि आपको फ़ौरन लिख दें। और अगर आपको तब तक समझ नहीं आई थी तो आपने पीछे करके दोबारा प्ले कर लेना है। आई एम सेइंग इट अगेन। देन द प्रोफेसर सेड यू नीड द मोस्ट इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उन्होंने आगे भी बोला कि यू नीड इम्प्रूवमेंट इन दिस एंड इन दिस मैटर, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 वर्ड्स होंगे, और उन्होंने सबसे पहले सॉलिडली यही मेंशन किया है कि नीड्स द। उन्होंने ये नहीं कहा नीड्स इम्प्रूवमेंट इन, उन्होंने ये नहीं कहा किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नीड्स द। तो वहाँ पे आपने इस आंसर को देना है। नेक्स्ट हमारा था स्कोर, जिसमें यू हर्ड इट, मार्क ने अपने आप को मार्क्स दिए हैं 6, वहीं पे ऐना ने दिए हैं 7। यस करेक्ट। अब हम नेक्स्ट कन्वर्सेशन प्ले करते हैं और नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। Now it turns to part 3. Part 3. You'll hear a conversation between the tutor and 2 students about the presentation. First, you have some time to look at questions 21 to 26. ओके तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा, आप क्वेश्चंस की तरफ देख सकते हैं। देख लें पहले रूल्स को कि आपने सर्कल करना है A to C जो आंसर बनता है। ओके, उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि आंसर शीट पे आपने आंसर नहीं लिख देना, आपने A, B या C लिखना है कि करेक्ट कौन सा बनता है, ठीक है। तो अब हम पहले सवाल थोड़े गो थ्रू करते हैं, उसके बाद इनको अटेम्प्ट करते हैं। तो पहले आप ये देख लें कि 3 ही सवाल हैं और 3 ही हमारे पास जवाब है A, B, C के सूरत में। तो हमने A, B, C आंसर में भी उन्हीं को लिखना है, तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने सवाल देख लेने हैं कि उन्होंने 3 सिनेमा के बारे में बात की है, ठीक है। जो कि पहला सिनेमा जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, ऑडियंस के लिए वो बिगेस्ट है, तो वो कौन सा है, तो वो नाम मेंशन करेंगे। फिर दूसरा सवाल है कि जो सिनेमा है उसमें लेटेस्ट फिल्म्स दिखाई जाती हैं, तो ये कौन सा वाला सिनेमा होगा। फिर लास्ट होगा द मोस्ट पॉपुलर सिनेमा, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों ने आंसर करने हैं। तो पहले हम सुनते हैं और फिर हम देखते हैं कि आंसर्स क्या हैं। Now listen carefully and answer questions 21 to 26.
Good morning, everyone. Well, I think we can start straight away by getting Rose and Mike to do their presentation. Would you like to start, Rose? Yes, well, we've done a survey on local entertainment. Basically, we try to find out how students feel about the entertainment in the town and how much they use it. Yes, so we've called our project Out and About. Yes, that's a good title, Out and About. We wanted to find out how well students use the entertainment facilities in town, whether they go to see the latest plays, films, that kind of thing. Now we have our own facilities on campus, of course. Yes, we deliberately omitted those as we really wanted to examine outside entertainment in the town. Actually, there were a lot of areas to choose from, but in the end we limited ourselves to looking at 3 general categories: cinema, theatre, and music. Right. Okay, well, first of all, cinema. In the town, there are 3 main places where you can see films. There's the new multi-screen complex cinema, the old park cinema, and the late night Odeon. So if you look at this chart, in terms of audience size, the multi-screen complex accounts for 75% of all cinema seats. The park cinema accounts for 20% of seats, and the late night Odeon has just 5% of seats. As you probably know, the complex and the park show all the latest films, while the late night Odeon cinema tends to show cult films. So when we interviewed the students, we thought the complex would be the most popular choice, but surprisingly it was the late night Odeon. Yeah, and most students said that if they wanted to see a new film, they waited for it to show at the old park, because the complex is more expensive and further out of town, so you have to pay more to get there as well. Yes, and that adds to the cost, of course, and detracts the popularity, evidently. ओके तो आप लोगों ने देखा कि हमारा क्वेश्चंस का सीक्वेंस और आंसर का सीक्वेंस बाय चांस सेम था. हमारा बिगर ऑडियंस है मीडिया कॉम्प्लेक्स सिनेमा में. हमारा जो मोस्ट लेटेस्ट फिल्म सिखाता है वो ओल्ड पार्क सिनेमा है, बट मोस्ट पॉपुलर ऑडियंस सिनेमा है. तो उन्होंने कन्वर्सेशन ऐसे की है, स्ट्रेट फॉरवर्डली की है, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा उनका एक्सेंट बहुत नेचुरल था, वो स्लो नहीं बोल रहे थे. दे आर टॉकिंग इन अ वेरी नेचुरल इंग्लिश वे, तो आपको फोकस होकर सुनना पड़ेगा और ज़्यादा. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. तो अब हम नेक्स्ट 24 to 26 क्वेश्चन पे जाते हैं. हमें कोई इसमें टाइम नहीं मिलेगा, इंस्टेंटली वो मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे इन पे. तो आपको पता होना चाहिए कि वो थिएटर्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो आपको जो टाइम मिला है पहले उसी में आपने सारा पढ़ लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले वो सिनेमा के बारे में बात करेंगे, थिएटर्स के बारे में, थिएटर के बारे में उन्होंने पॉपुलैरिटी नॉन पॉपुलैरिटी की बातें करनी है, और वो बिटवीन द ईयर्स बात करेंगे उनको रखते हुए. एनीवेज हम इनको अब सुनते हैं और फिर देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं और नोट डाउन करते हैं 1 by 1. तो फोकस्ड होकर सुने. सो लेट्स स्टार्ट. मैं कन्वर्सेशन प्ले करने वाली हूँ. Well, next we looked at theatres. The results here were interesting because, as you know, there's a theatre on campus which is popular, but there's also the stage theatre in town, which is very old and architecturally beautiful. And there's the large modern theatre, the Ashtop, has recently been built. So you just looked at the 2 theatres in town? Yes. What was interesting is that there are periods during the year when students seem to go to the theatre and periods when they go to the cinema, and we really think that's to do with budget. If you look at this graph, you can see that there's a peak around November and December when they go to the theatre more. ओके सो आई विल स्टॉप राइट हियर. मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कैसे फ्लो में बोला है. अगले 2 आंसर्स भी वो ऐसे फ्लो में बोलेंगे, तो आपको बहुत अटेंटिव रहना है. उन्होंने बोला है कि नवंबर और दिसंबर में पीक पे था, पीक ऑफ थिएटर था. ठीक है, तो फिर आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन 24 पे बी ऑप्शन लिख देना है. ठीक है, और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको 20 सेकेंड या 10 सेकेंड मिला करेंगे ताकि आप अपने आंसर्स फिर से देख सकें. तो लिसनिंग में देयर इज़ अ टाइम, लिसनिंग में यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर एज मच मार्क्स एज यू कैन, एंड यू कैन डू योर बेस्ट. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. उसमें मैं स्टॉप नहीं करूँगी और आपने उसके आंसर देने हैं. ठीक है. And then a period in April and May when neither is particularly popular, and the theatre viewing seems to fall off virtually, while the cinema becomes quite popular in June and July. I think you're probably right about your conclusion. सो या दैट्स ऑल. उन्होंने हमारे आगे ऑप्शन बोले. उन्होंने कहा अप्रैल से मई तक नाइदर वॉज पॉपुलर, और फिर उन्होंने 26 में बोला कि ड्यूरिंग जून एंड जुलाई
सिनेमा पीक पे था और थिएटर रिवर्स पे था। ठीक है, इस तरह हमारा एंड होता है पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 3। तो अब हम मूव करते हैं ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कन्वर्सेशन प्ले करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ हाउ द क्वेश्चन आर गोना लुक। सो हमारा कुछ पेपर इस तरह दिख रहा है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सब पेपर ऐसे हों, हमेशा फॉर्मेट डिफरेंट भी होता है लिसनिंग में। ठीक है, बट ऑन दिस पेपर हमारे पास 27 to 30 क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास 4 टोटल क्वेश्चन है और हमारे ऑप्शन 3 हैं। वो बात करने वाले हैं क्लब के बारे में, सनराइज़ के बारे में, होटल के बारे में और कैफ़े के बारे में। और आपने मैच करना है अप्रोप्रिएट लेटर विद म्यूज़िक क्लब। ठीक है, वो उन्होंने बोला हुआ है। तो ए ऑप्शन है पुअर क्वालिटी, बी इज़ ओके एंड सी इज़ एक्सीलेंट। तो आपने बहुत फोकस होकर सुनना है बिकॉज वो तेज़ी से भी बात कर सकते हैं इन दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कन्वर्सेशन। ऑल्सो आपने अटेंशन पे करनी है टिप पे जो उन्होंने सामने दी है, क्योंकि वो हमेशा पुअर क्वालिटी, ओके, एक्सीलेंट कोई वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। वो शायद ये टिप पे जो लिखा हुआ है क्रॉस, डबल टिक, वन टिक को यूज़ कर सकते हैं कि वी गॉट अ क्रॉस इन दिस, वी गॉट अ टिक ऑन दिस, टिक का मीन ओके, वी गॉट अ डबल टिक ऑन दिस, वो एक्सीलेंट होगा। तो उन्होंने टिप्स आपके सामने दी हैं कि व्हाट इफ़ वो वर्ड मेंशन ना करें, जिस तरह क्वालिटी, गुड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी, ओके क्वालिटी, उसके बजाय वो ये मेंशन कर दें कि वी गॉट क्रॉस, वी गॉट डबल टिक, वी गॉट टिक। तो आपने ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये आपने सारा, आपको जो टाइम मिलेगा आपने पढ़ लेना है। ठीक है, नाउ यू हैव रेड दैट। तो हम मूव ऑन करते हैं ऑन आवर कन्वर्सेशन। Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. Well, lastly we looked at music, and this time we were really investigating the sort of small music clubs that offer things like folk or specialize in local bands. So not musicals as such. That's right. We looked at 3 small music venues and we examined the quality of the entertainment and venue and gave a ranking for these. A cross meaning that the quality was poor, a tick meaning it was okay, and 2 ticks for excellent. First of all, the Blues Club, which obviously specializes in blues music. This was a pretty small place and the seating was minimal, so we didn't give that a very good rating. No, we don't recommend that one really. Then the Sunrise, which plays a lot of South American music, was a big place, very lively, good performers, so 2 ticks for that one. The Pier Hotel is a folk venue, a good place for local and up-and-coming folk artists to play. Not the best of venues as it's in a basement and a bit dark, but the quality of the entertainment was reasonable and the lighting was very warm, so we felt it deserved an average rating. Finally, there's the Bald Rock Cafe, which features big rock bands and is pretty popular with students. And we enjoyed ourselves there as well, so total marks for that one. And then did you get any information from the students as to which of the clubs they preferred? सो वी गॉट आवर आंसर्स। और मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने ट्रिक किया ना, राइट, कि उन्होंने कहीं पे डबल टिक मेंशन किया है कि वो गेव इट डबल टिक। उन्होंने कहीं पे कहा कि एवरेज था, एवरेज इज़ ओके मीन 1 टिक। मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे आप अगर फ़ौरन वर्ड पूरा सेंटेंस या कुछ भी नहीं लिख सकते, आप बेशक डबल टिक फ़ौरन लगा दें उस आंसर पे जब आपने सुना है, ताकि जब आप आंसर शीट पे करें तो आप एक्चुअल आंसर करें। ठीक है, ये खुद को याद रखने के लिए और ख़ुद को थोड़ा सा ईजी रखने के लिए। तो यहाँ पे आपने सारे आंसर्स फिगर आउट कर लिए, आपने बहुत अटेंटिवली सुना, वेरी गुड। आपने सिर्फ वर्ड्स नहीं सुने, आपने बल्कि ये भी सुना है कि वो डिफरेंट वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने कौन से टिप या रिमेंबर एक्सप्रेशन यूज़ किया है, विच इज़ टिक, डबल टिक, क्रॉस दिया हमने। तो वेरी गुड अबाउट दैट। तो अब हम मूव ऑन करते हैं ऑन लास्ट सेक्शन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एज वेल। एंड चलें उसकी कन्वर्सेशन सुनते हैं और मैं आपको पहले दिखाती हूँ हाउ इट्स गोना लुक लाइक। दिस इज़ और लास्ट सेक्शन जहाँ पे टोटल हमारे पास 31 से 40 तक क्वेश्चन होंगे। पहले वो मेंशन करेंगे अबाउट 31 to 36 क्वेश्चन का। इसमें वो आपको टाइम देंगे और आपको बोलेंगे कि यू कैन लुक एट द क्वेश्चंस फॉर अ सेकंड, और बाद में आपको वो इंस्टेंटली बोलना स्टार्ट होंगे और फिर वो इसके बारे में आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही 37 और 40 का भी वैसे ही बोलेंगे, फ्लो में वो बोलेंगे और आप देख सकते हैं वो बिल्कुल एक पैराग्राफ है और आपने बड़े अटेंटिवली सुनना है। तो हमारे जो पहले सवाल हैं उनके पहले रूल्स पढ़ लेते हैं कि नो मोर देन 2 वर्ड्स इन द फर्स्ट पार्ट 31 and 32, और फिर हमारा जो सेकंड है
क्वेश्चन 33 to 36 उसमें हमारा रूल पढ़ लें कि 1 word ओनली फॉर ईच। वहाँ पे आपने ऐसे आंसर्स देने हैं। तो अब हम सुनते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन से गो थ्रू हो लेते हैं। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन देंगे, सोर्स इज़ विकीपीडिया सिमिलर टू, वो देने वाले हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। एंड देन दे आर टेलिंग हु आर ऑथर्स ऑफ विकीपीडिया। ऑथर्स ऑफ विकीपीडिया के बारे में बात करेंगे, नाम लेंगे। फिर मूविंग ऑन उन्होंने नेक्स्ट जो फ़ौरन देना है, उन्होंने स्टेजेस और एक्शन के बारे में बात करनी है, जिसमें स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप ई तक है। और वहाँ पे वो स्टेजेस और एक्शंस के बारे में आगे पीछे होकर बात करेंगे। तो कुछ उन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं, कुछ उन्होंने स्पेस बनाई हुई है, तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। जैसे पहला है डिसीजन टू चेंज, तो उन्होंने एक्शन बोला है सिलेक्ट एडिट। सेकंड है जो 33 हमारा क्वेश्चन है डैश चेंजेस, जिसका एक्शन होगा टाइप, कट, पेस्ट एंड डिलीट। इस तरह करके आप अटेंटिव होकर सुनेंगे कि चलो वो स्टेप ए, स्टेप बी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इंस्टेंटली यू हैव टू राइट द आंसर्स, और उसके बाद यू विल गेट द टाइम टू पुट देम इन द आंसर शीट। सो गुड लक विद दैट। और अब हम सुनते हैं इसको और आंसर जानते हैं। Now, listen carefully and answer questions 31 to 40. Good afternoon. I'm Jenny Ironbridge, and today I'm going to be continuing my series of talks on information technology by looking at an innovative information source available on the internet. I'm sure you're all familiar with the strengths and weaknesses of the popular search engines like Google or Yahoo. Sometimes you can find what you're looking for instantly. At other times, searching for something which may or may not exist can be a frustrating and time-consuming experience. So, where can you go to get the information you want? The information source I want to talk about is called Wikipedia. As its name suggests, it's a form of encyclopedia. It's already the largest information source in history, both in terms of its breadth and its depth. But what makes Wikipedia really unique is that it's a democratic project. The content is completely free to access, and it's written entirely by unpaid volunteers. Changes and additions are being made all the time to articles which exist already, but it's also possible to contribute whole new articles. And basically, anyone can contribute once they've grasped the basics of editing the pages. ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। उन्होंने बात की कि वो सिमिलर उन्होंने नहीं वर्ड यूज़ किया। उन्होंने बोला है कि दिस इज़ विकीपीडिया विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो आपने वो वर्ड मिस नहीं करना, फ़ौरन नोट डाउन करना है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक क्वेश्चन था, उन्होंने कहा हु आर द ऑथर्स ऑफ विकीपीडिया। तो हम एक्सपेक्ट शायद कर रहे थे कि एक नाम होगा, दो नाम होंगे, वो उनके नाम बोल देंगे, लेकिन बजाय उसके उन्होंने बोला है अनपेड वॉलंटियर्स। अनपेड वॉलंटियर्स, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ नेम दैट इज़ ओके, बट आपने अटेंटिव होकर सुनना है कि व्हाट दे आर गोना मेंशन। तो आपने उन्होंने बोला है कि विकीपीडिया के ऑथर्स हैं अनपेड वॉलंटियर्स। इस तरह ही हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट सवालों पे, विच इज़ गोना बी विद द सेम फ्लो। तो आपने उतना ही अटेंटिव होकर सुनना है, क्योंकि एक मिस हो जाए तो नेक्स्ट मिस हो जाते हैं, लेकिन हमने मिस नहीं करने। Let's look at how someone goes about editing Wikipedia articles. It's a very straightforward procedure, which has been made deliberately easy so that people who have contributions to make are not discouraged from participating because of their limited understanding of information technology. Let's start by imagining that we are reading an article and we come across information that we consider to be incorrect or incomplete on a page of Wikipedia. First of all, we decide we'd like to change it. To do this, we click on the Edit button at the top of the page. This takes us to another page with a text box containing all the editable text on that page. It's at this point that we can input our changes in exactly the same way as we would if we were writing or editing a document we had created on our own computer. In other words, we can type, cut and paste, delete, and use all the normal word processing functions. ओके, आई एम टेकिंग अ पॉज अगेन, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि उन्होंने मेंशन कर दिया है आंसर, और कई लोगों ने शायद मिस भी कर दिया हो, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एकदम से मेंशन किया कि लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस थिंग। तो पहला स्टेप ये होगा कि इफ़ यू वांट टू डिसीजन टू चेंज, इफ़ यू वांट टू टेक अ डिसीजन टू चेंज, तो आप क्या करेंगे, यू विल सेलेक्ट एडिट। आप एडिटिंग चूज़ करेंगे, उन्होंने सेलेक्ट एडिट चूज़ करने को बोला। फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वी विल डू कि हम इनपुट चेंजेस करेंगे। आपने यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है कि जब वो चेंजेस का जिक्र करेंगे कि नेक्स्ट किस चीज़ पे हम चेंज डालेंगे, क्या करेंगे, तो पहले उन्होंने कहा डिसीजन।
ठीक है। उन्होंने बाद में एक और चेंज का नाम लिया विच इज़ इनपुट। हम इसको मिस ना करें, हम बहुत अटेंटिवली सुनेंगे। फिर बाद में उन्होंने एक्शंस का बताया कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे टाइप, कट और पेस्ट होता है। नेक्स्ट जब वो किसी भी चेंज के बारे में बात करने वाले हैं उसका भी हमने फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, हमने फ़ौरन से वो भी पुट करना है, लेकिन उसका एक्शन भी दिया हुआ है। हमारा जो स्टेप डी है उसमें हमारा स्टेजेस उन्होंने लिखी हुई हैं कि चेक चेंजेस, लेकिन उन्होंने हमारे एक्शन मिस कर दिए हैं विच इज़ सेलेक्ट डैश ऑप्शन। तो वो हमने अटेंटिव होकर सुना है कि कौन सा ऑप्शन। स्टेप ई पे भी सेम है कि उन्होंने कंफर्म चेंजेस का कहा है स्टेजेस में, लेकिन एक्शन में दिस अ फिलिंग द ब्लैंक कि क्लिक ऑन डैश टू फिनिश फर्दर चेंजेस। तो हमने अटेंटिव होकर सुना है। तो अब हम अपने नॉन स्टॉप वो 3 सवाल करेंगे और फिर मैं आऊँगी आपके पास पूछने कि हाउ डिड यू डू इट। This has been done and our own computer. In other words, we can type, cut and paste, delete, and use all the normal word processing functions. When this has been done and we've finished editing, we are then asked to summarize the changes we've made. This doesn't go into the main text box, but into a separate area below it. That's the main part of the process over with. But we need to make sure that the changes we've made are going to appear as we want them. A last check, if you like. In order to do this, we select the preview option. If we're still not satisfied, we have the option of returning to the edit stage and working through the same procedure again. Finally, if we're satisfied with the result, we simply click on Save and our changes will take immediate effect. सो हेयर यू गो। उन्होंने तीनों आंसर मेंशन किए हैं और बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किए हैं। अगर हम गौर से सुनेंगे हम एक भी मिस नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। तो पहले उन्होंने कहा कि हमने समराइज़ करने हैं चेंजेस। उन्होंने कहा है चेंजेस, तो साथ ही आपने पता चल गया होगा आपको कि उन्होंने वर्ड कौन सा मेंशन किया है विच इज़ समराइज़। फिर उन्होंने बताया कि जो अगला है जिसमें चेक चेंजेस करने हैं उसमें सेलेक्ट क्या करना है, प्रीव्यू हमारा, ठीक है। दैन नेक्स्ट उन्होंने फिर लास्टली उन्होंने मेंशन किया है कि एट लास्ट विल कंफर्म द चेंजेस। वो कैसे करेंगे, बाय क्लिकिंग ऑन सेव ऑप्शन, ठीक है। इस तरह हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, हम आंसर करेक्टली देंगे और हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो कि आप कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ़ यू गाइस। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने 37 to 40 क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल भी पॉज नहीं करूँगी, हम फ्लो में करेंगे ताकि ये आपका एक टास्क जैसा हो। कोई टिप नहीं होगी इसके बारे में, कोई बीच बीच में आपको रोक के नहीं बताऊँगी कि आप ज़रा ध्यान से सुने ये कहने वाले हैं, क्योंकि ये हमने ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। तो ये मैं आपको पहले बताती चलूँ कि कंप्लीट द समरी बिलो है। इसमें समरी के बारे में बात की जा रही है, एक समरी की तरह है। तो उस तरह वो पूरा पैराग्राफ बोलते जाएंगे, तो जो जो उन्होंने मिस किया हुआ है फिल इन द ब्लैंक है उसको फिल करना है। लेकिन आपने थोड़ा सा उसको पढ़ लेना है कि क्रिटिसिज्म ऑफ विकिपीडिया इज फोकस ऑन द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन ऑफ। तो आपने वो पहले पढ़ लिया कि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन ऑफ क्या है। फिर आपने सारी कन्वर्सेशन सुनी है एंड देन वो आपको आना है, तो आपने नोट करना है कि ओवर टाइम दे आर एबल टू इम्प्रूव देयर डैश। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कई बार जब ये लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा होता है वो बहुत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश में बोला जा रहा होता है विद द सेम विच इज़ रिटन, तो मिक्स वर्ड्स नहीं होते हैं। हाँ, जो वो बोलते हैं शायद वो थोड़ा सा फ्लो में बोल दें, आपको नेचुरल इंग्लिश में बोल दें तो वो शायद पिक ना कर पाए, लेकिन वो बिल्कुल एज इट इज़ होता है। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड गुड क्वेश्चन टू डू और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये वाला टास्क। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी कन्वर्सेशन और मैं आपको एक और बात बताती ज़रूर कि आपने एक एक वर्ड सुनना है जो कि वो बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस होकर सुनना है, सारी डिस्ट्रैक्शन भूल जाएं और ये आपने सुनना है। और ये आपका टेस्ट है, आपने मुझे बताना है कि हाउ मेनी यू हैव अचीव्ड आउट ऑफ ऑल। तो अब अपनी कन्वर्सेशन प्ले करते हैं। A question that might already be forming in your mind if you are not familiar with Wikipedia is this: how can I tell whether information is accurate? This particular point has led to criticism from some people, especially academics and professionals. The short answer is that you can't tell. But if you think about it, how can you check the accuracy of information you read in a conventional encyclopedia, or in a newspaper, or on other internet websites? Besides, it's possible for contributors to Wikipedia to register with the organization and, as named contributors, gradually build up a reputation for themselves as reliable sources of information. The other point to be aware of is that there are administrators who monitor contributions that are added by anonymous sources and check for biased, out-of-date, or incorrect information. One of the problems that arises from the openness of Wikipedia is that vandals have got into the site to change and damage pages of information. So the administrators have a role in policing this too. Lastly, Wikipedia encourages editors to stick to certain rules,
which help ensure the quality of entries. For example, contributors are expected to maintain a neutral tone in their writing, although perhaps it's impossible to be completely neutral. Also, entries are not allowed to include original research, which is intended to prevent contributors from simply submitting their own views. It's unlikely that the more conventional information sources will ever be completely replaced by Wikipedia or similar projects which may be developed in the future. But this is an ambitious experiment to democratize information, using modern technology to enable anyone and everyone to contribute to and access a common body of knowledge. And because it's free, it doesn't restrict access to those with the ability to pay. That is the end of part 4. I know some of you missed it. आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ था. It's okay. प्रैक्टिस हो जाएगी तो that will be better. बट मैं आपको बता दूँ कि उनके आंसर्स जैसे मैंने नोट डाउन सामने स्ट्रेट अवे कर दिए थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि उन्होंने कंप्लीट वर्ड्स नहीं यूज़ किए यहाँ पे. उन्होंने बोला है सबसे पहले कि कॉमनली क्वेश्चन किया जाता है अबाउट द एक्यूरेसी. ठीक है, उन्होंने एग्जैक्ट सेम वर्ड कई दफ़ा नहीं बोल सकते हैं, वो उन्होंने नहीं बोले. उन्होंने कहा एक्यूरेसी में एक होता है, क्वेश्चन किया जाता है. उसके बाद दे मेंशन्ड कि उनकी रेपुटेशन हैज़ बिन रप्चर्ड. फिर वो बीच में वर्ड मेंशन कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट नाउ. तो उन्होंने मेंशन किया कि कंट्रीब्यूटर्स आर रजिस्टर्ड विद द साइट, तो ओवर टाइम पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं रेपुटेशन को. ठीक है, दे हैव सेड इट. उसके बाद दे से कि एक बहुत कॉमन चीज़ है कि वैंडलाइजेशन हो जाती है, तो उसको आपने लिखना है कि दे नीड टू प्रिवेंट वैंडलिज्म. ओके, तो उन्होंने वर्ड डिफरेंट यूज़ किया है, बट आपको पता है कि यहाँ पे आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है. लास्टली दे सेट किया अदर पॉलिसीज टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स इंक्लूड अ रूल दैट एंट्रीज शुड एम टू डैश इन राइटिंग स्टाइल. और यहाँ पे उन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली वर्ड यूज़ किया कि दे नीड टू हैव अ न्यूट्रलिटी इन राइटिंग स्टाइल, और आपने नोट डाउन कर लेना है. मुझे पता है कई लोगों को समझ नहीं आया, कई लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली पैराग्राफ काफ़ी नेचुरल वे में बोला गया है, तो मिक्सड एवरीथिंग, दे वर नॉट श्योर बट इट इज़ हैपनिंग. तो एक काम करें, दोबारा पीछे जाएं और रीप्ले करें और फिर उसके बाद फिर से सुने. लेकिन इस बार यू न्यू द आंसर, आपको आंसर पता होंगे, या फिर एट द एंड राइट अवे, बल्कि इनफैक्ट आई एम पोस्टिंग इट हियर. अब मैं आपको ये आंसर्स दे रही हूँ, दीज आर द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. इसको सेव कर लें, इनको सामने रखें एक बार, ठीक है, और टेस्ट को प्ले करें, और पूरे टेस्ट को प्ले करें और आंसर्स आपके सामने हैं. आपको पता होगा कि ये वर्ड अच्छा सामने आ गया तो चलो यही आंसर है. इस तरह हम दूसरी बार प्रैक्टिस करेंगे तो वही आंसर्स को साइड पे कर दें. ब्लाइंडली एंड ब्लैंकली आप दोबारा वो अटैम्प्ट करें और फिर अपनी इम्प्रूवमेंट देखें. और बेशक मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक टेस्ट को आप बार बार अटैम्प्ट कर सकते हैं अनटिल यू गेट अराउंड लाइक 40 to 40 मार्क्स. आपको पता चल जाएगा कि अच्छा प्रैक्टिस से आई कैन इम्प्रूव, और इस तरह ही यू नीड टू प्रैक्टिस so much, and I'm going to come back with more tests like this. So on this note I will end my video. तो आपने मुझे अब कमेंट सेक्शन में हमने बताना है कि आपकी कितनी हेल्प हुई है. ठीक है, साथ साथ आपने बताना है कि आपने कितने स्कोर अचीव किए हैं, और साथ साथ डू लेट मी नो अबाउट द सजेशंस. Until then, stay tuned for full course of IELTS. Allah Hafiz guys.